Hello students, our next lecture is thermodynamics. It is a branch of physics that deals with the heat changes during a chemical or physical process. Thermodynamics is a very important branch of physics. Thermo means heat and dynamics means changes. It is a branch of physics that deals with the heat changes during a chemical or a physical process. See, there is a term called system. As we already discussed, say this cylinder is a system and everything besides the system is known as surroundings. हम लोगों ने orally last हमने lecture में भी पढ़ा था. A system may be open system. Open system में there is a exchange of heat between the system and surrounding. Open system. We may have a closed system and we may have an insulated system like a thermos flask. थर्मस फ्लास्क इज ए इंसुलेटेड सिस्टम जिसमें इंटरनल हीट बाहर नहीं जा सकती, बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती. सो इन थर्मोडायनेमिक्स वी डील विद वेरियस हीट चेंजेस एंड वी डिस्कस द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आई एम स्टार्टिंग विद जीरोथ लॉ. मैं शुरुआत कर रहा हूँ जीरोथ लॉ से. जीरोथ लॉ डील्स विद थर्मल इक्विलिब्रियम. देखिए ये नेचर का रूल है, कोई भी चीज़ का जो फ्लो है दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. अगर हम गैस की बात करें तो गैस फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इफ़ यू टॉक ऑफ हीट, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. इफ़ यू टॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सो देयर शुड ऑलवेज बी अ डिफरेंस ऑफ लेवल्स फॉर द फ्लो. सो टू एक्सप्लेन द zeroth law, please consider this system. This is A, B and C. Say this is a compartment. A और B के बीच में we have insulating wall. Insulating wall means there is no flow of heat across A and B. And A और C और B के और C के बीच में we have a conducting wall. Try to understand. A may be at higher temperature or C may be at higher temperature. If A is at a higher temperature, heat will flow from A to C. If C is at a higher temperature, heat will flow from C to A. Unless and until A is equal to C. If B is at a higher temperature, heat will flow from B to C. If C is at a higher temperature, heat will flow from C to B, means B is equal to C. That shows that A is equal to B. Means in spite of having an insulating wall, a stage reaches when the temperature of A becomes equal to B. Is that clear? So that gives us the concept of thermal equilibrium. Next we come to फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ बहुत ही बेसिक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का. दैट डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज व्हेन a system is provided heat, हमने एक सिस्टम को हीट दिया dq, that heat is utilized in changing the internal energy plus external work done. आप इस सिलेंडर को कंसिडर करिए, इसमें n moles of ideal gas हैं, it is being heated. तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कोलाइड करेंगे as well as they will collide with the walls of the container. As we have studied, friction causes heat and heat causes rise in temperature. Say this piston expands by a distance dx. ये dx से expand हुआ और small work done by the system is f dx. As we know, pressure is force upon area. So we can write force is equal to pressure into area into dx. Area into distance is volume. So this is pdv. To find the total work done, we can integrate it between the limits v1 to v2. So this is the mathematical form of first law of thermodynamics. The amount of heat given to the system is utilized in increasing the internal energy of the system and external work done. This heat can be equated with, देखिए heat का formula हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. It may be mc delta T. What is this C? That is specific heat. Delta T is the rise in temperature. You know, in terms of state change, when I say state change, means the conversion of solid to liquid and conversion of liquid to gases, isn't it? So in case of state change, what is the formula? dq is equal to ml. This L stands for
latent heat. C stands for specific heat. As the name suggests, specific heat is specific to different material. Every material has got its own specific heat. du is the change in internal energy. Internal energy is the sum of all the energies. हिंदी में इसको आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है. It is equal to the sum of all the energies possessed by the gas molecule, means kinetic energy, potential energy, rotational energy, right, vibrational energy. So the sum of all the energies like kinetic, potential, rotational, vibrational, nuclear. So we cannot find the absolute value of internal energy. Basically we find the internal energy change, that is delta U is equal to U2 minus U1. U1 is the initial internal energy, U2 is the final internal energy. dW is either work of expansion or work of compression. We will discuss some sign convention also, as work done can be written as P delta V. P delta V is P V2 minus V1. So there are various sign conventions. The various sign conventions are heat absorbed by the system is taken as positive. अगर कोई system heat absorb कर रहा है उसको हम positive लेते हैं. Heat evolved by the system is taken as negative. ये sign convention हमको याद करने while solving the numericals. Increase in internal energy is taken as positive. Increase in internal energy means when a system absorbs heat, obviously its internal energy will increase. Decrease in internal energy is taken as negative. Alright. dW means work done. Work of expansion is taken as positive, means when the system expands from volume V1 to V2, it is taken as positive. Work of expansion is taken as positive, means work done by the system. Work of expansion means work done by the system is taken as positive. Work of compression is taken as negative. Work done on the system is taken as negative. So they are the various sign convention. Using first law of thermodynamics, we can explain isothermal process, we can explain adiabatic process, we can explain boiling process, we can explain melting process. So first law of thermodynamics has got certain application. There are certain drawbacks also. The first law of thermodynamics cannot explain the direction of heat flow. This is the drawback, mind it. हमें फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है. एंड वी नो हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो. इट कुड नॉट टेल how much heat can be converted into work. That was given by second law of thermodynamics. So second law of thermodynamics basically deals with engine, heat engine. And there were scientists Kelvin, Clausius. They said कि heat cannot flow from low temperature to high temperature. It's a common sense कि कभी भी heat low से high की तरफ flow नहीं करती, but it can be made to flow by doing some external work. So second law gave the concept of heat engine. Heat engine is a device which converts heat energy into mechanical work. हम जितने भी ये गाड़ियाँ देखते हैं वो सारे heat engine हैं. In fact, refrigerator is also heat engine, but that works in opposite direction. So this concept was given by Carnot. So we use the term Carnot heat engine, which has this flow chart: source, then working substance, source, working substance, and then we have sink. Just try to understand. I am just giving you the flow chart, the blueprint of a heat engine. It consists of a source. Source is a body which is always at higher temperature. It is infinite reservoir of heat. सोर्स के पास बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है जिसका टेम्परेचर हम T1 केल्विन लेते हैं. हीट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक. हीट फ्लो कर रही है सोर्स से सिंक की तरफ. सिंक इज अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. आप सिंक को ऐसे समझ सकते हैं, अवर एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ सिंक. हमारा जो वायुमंडल है, आर एटमॉस्फेयर, दैट एक्ट्स एज अ सिंक. ऑल द रिजेक्टेड हीट गोज टू सिंक. मैं इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. हम व्हीकल में, टू व्हीलर में हम किक मारते हैं तो उसमें इग्निशन होता है, स्पार्क एंड ऑल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन. स्पार्क हुआ, इंजन ने वर्क किया, and that work is given by W is equal to Q1 minus Q2. Q1 is the heat of the source, Q2 is the heat of the sink. So this work is done by the engine and the rejected heat goes to sink. Is that clear? This concept was explained by Carnot. So we use the term Carnot heat engine. Source हमेशा उच्च तापमान पे होती है. It has got higher temperature and higher heat. We all know Q is directly proportional to T. मतलब Q upon
T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो वी कैन राइट इट लाइक दैट Q1 upon T1 is equal to Q2 upon T2. We can use this expression, isn't it? हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो की तरफ, रिजेक्टेड हीट सिंक में जाती है, हमारा एटमॉस्फेयर सिंक का काम करता है. दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेदर ड्रिफ्टिंग, ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. आप देखिए विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, विद ओवर यूज ऑफ व्हीकल्स, आप देखिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही हैं. अभी रिसेंटली लेटली जो अभी जोशीमठ में जो ये सब हुआ है, हम जो ट्रेजेडी बोल रहे हैं, दैट इज अ इफेक्ट ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग. You know, there was a sudden burst of iceberg and water, so many things, so that is directly related to this. So efficiency of heat engine is given by eta, or wherever we use the term efficiency, that is output upon input. In case of heat engine, output is work and input is Q1, so we can write Q1 minus Q2 upon Q1. In terms of temperature, it can be written as T1 minus T2 upon T1. If we have to express it into percentage, we multiply it by 100. So heat and temperature are directly proportional. More the heat, more is the temperature. T1 is the temperature of source, T2 is the temperature of sink, and always mind it, T1 is always greater than T2. Besides, the efficiency of heat engine can never be 100%, because to have a efficiency of 100% or unity, this T2 should be 0 Kelvin. सिंक का टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन नहीं हो सकता. इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव दैट टेम्परेचर. सो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1 और 100%. इसी का एक और एप्लीकेशन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड हीट पंप. हम लोग रेफ्रिजरेटर को हीट पंप बोलते हैं. इट इज अ कार्नोट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन. इट इज अ कार्नोट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन. देखिए आप इसी डायग्राम को रेफर करिए. आई हैव ट्राई टू मेक इट सिंपलर विदाउट गोइंग इनटू मच इंट्रिकेसीज. हम अब सिंक से सोर्स की तरफ जा रहे हैं. दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर इज ऑल्सो नोन एज हीट पंप. सिंक इज अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. हम सिंक से सोर्स की तरफ जा रहे हैं एंड वर्क इज डन फ्रॉम आउटसाइड. सी द कंप्रेसर ऑफ रेफ्रिजरेटर और द रेफ्रिजरेंट, आप सबको पता है पहले फ्रेन एक गैस यूज होती थी जिसका फॉर्मूला CCl2F2, जिसको हम लोग डाईफ्लोरिडो मीथेन बोलते थे. दैट इज अ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट नाउ इट हैज बीन बैंड. व्हाई? इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन टू ओजोन लेयर एंड ऑल. बट नाउ डेज अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट. तो वर्क इज डन फ्रॉम आउटसाइड. सिंक के लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर की तरफ ले जाया जाता है, और रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. द वर्ड इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. इट इज डिनोटेड बाय बीटा. इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं. इन दिस केस द आउटपुट इज, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर द आउटपुट इज Q2 एंड इनपुट इज W. So you can write Q2 upon Q1 minus Q2, or in terms of temperature it is T2 upon T1 minus T2. So students, as far as your class 11th is concerned, these are the basic concepts in thermodynamics. Zeroth law, first law, then second law. Second law gave the concept of heat engine or Carnot heat engine, right? Source to sink. In refrigerator, the Carnot heat engine works in reverse direction from sink to source. Work is done from outside. So this is the flow chart. Then there is an indicator diagram. हम लोग pressure volume का ग्राफ पढ़ते हैं. And then we discuss the work done during isothermal process, work done during adiabatic process. Adiabatic process में briefly समझा देता हूँ. हिंदी में इसको रुदोष्म प्रोसेस कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है. ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देयर इज नो हीट एक्सचेंज, डेल्टा क्यू इज जीरो. एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग PV रेज टू द पावर गामा से रिप्रेजेंट करते हैं. गामा इज कॉल्ड एडियाबेटिक कांस्टेंट, CP अपॉन CV. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वील एक्सप्लेन the work done during isothermal process, work done during adiabatic process, what are the conditions for isothermal process, conditions for adiabatic process, and so on. Hope it must have helped you. Thank you.